everyone. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. As I have been sharing with you a number of strategies to enhance your teacher's toolkit. Right, so I have now started sharing number of games, board games that you can use in your classes. In the morning, I have shared with you one game, tic-tac-toe, and that you can use across all your subjects. And now I'm going to talk about dice and grid game. Dice should be an integral part of our classes. Number of board games we can play using dice, right? You can make your own dice, a big size dice with children. They just would love to use that dice in the class, or you can use some ready-made dice. That's up to you. So why do we have to use such kind of board games? You know very well, during pandemic, we have given a lot of exposure to our students, and now they are addicted to screen and or every time they are busy watching mobile phones, they are busy watching different videos, pictures, and so many other things. So I mean, they are addicted to gamification. So we have to change the mode. Instead of video games, we have to bring some kind of board games, interesting games, so that we will be able to cover our syllabus too. We can use these games for revision purpose in our classes, right? So joy of learning, that should be there in our classes. So for this game, what do we require? We require dice and a grid. As you can see, I have written numbers from 1 to 6 on both the axis, x-axis as well as y-axis, and I have shown you some dice too. We require minimum 2 dice and we require a grid. Now what we have to do with the grid? Either this grid you can draw on your blackboard, or you can show pre-made grid on your smart board on the screen in your class, or if you want, you can use some printed papers as well, depending upon what kind of game you are using. These games you can use across all the subjects. Though I have named them grammar games, usually we play such games with different grammar topics in different languages. But here, let me tell you, I'll be giving you some idea where you'll be able to use these games across all the subjects. Rest, you know very well. You are so very intelligent, creative, you will be able to tweak it and use in any of the way. And I would request you, if you want to tweak it, if you want to share in some another manner, do share with us also in the comment section below. Now see, here is example I have taken for social sciences. Like on one axis, I have taken different factors: climate, food, industry, culture, dress, festival, different parameters I have taken. And on another axis, I have written names of a few countries: India, Nepal, Sri Lanka, and you can add on as many as you want. And I have highlighted here, you can use it for different countries or you can use it for states also. When we are talking about paired states, when we are talking about unity in diversity, children, they should know about different states, their climate, food, industry, culture, dress. This is just one example, but you can use it for different topics as well. Now, how to play this? When you will be having two dice, children will throw the dice and they have to check the number on both the dice. Suppose on one dice the number is 2 and on another dice the number is 3. You have to name, okay, number 2, the first dice, you have to label it. That is for x-axis, that is for y-axis, right? And or you can choose different colors as well, right? Accordingly, you should use the numbers. Like I have written in black numbers, you can write, suppose you are having a red dice, you can write numbers with red color on one axis and with green on another axis, depending upon the color of the dice that you have, right? So accordingly, if they are having number 2 and number 3, means they have to talk about food, right? On one axis, and another is written Sri Lanka. The child has to talk about food of a country, Sri Lanka, right? Accordingly, you can involve your children in such kind of games. You will be able to revise also your topics, and that would be fun learning, right? By adding some fun element to your class. So another example is in mathematics, you can write some digits on one axis. On another axis you can write whether they have to I've just given some examples: square, square root, they have to double the number, they have to multiply the same number with some another number, they have to divide the number with another number, they have to add, subtract. I mean, depending upon your requirement, you can go for that as well, right? So now in front of you there is another type of game. This is little bit tweaked version of that dice and grid game. In that dice and grid game, what you have to do, I'll be explaining you the same in Hindi as well. Have patience.
right? So what you have to do when you have thrown both the dice, you have got, suppose I on my uh, x-axis I have got number 3, and on my y-axis I have got number 2. Now I have to check the box, like number 2 is written break or peak, and here on number 3 I have written stole, and that is not matching with that particular word. So I have to find the corresponding word. It means my turn is over. I have to find the word that is corresponding to the word on another axis. For example, if I get on my dice, if I get on my dice 2, number 2 on my y-axis, and on x-axis I get number 1. So I will see it is written beak, it is blade. No, it's not matching. I have to see if I check number 4. Let me just tell you, if it is here number 4, it's written bleed, and I am getting 1, it's written bled, means I am talking about different forms of verb. So the child has to find the corresponding verb. If the child is getting, the child has to put a signature in that column. Yes, I have found it. Otherwise, the turn will be given to some another child. So that is another kind of game. It is bit a higher version of the previous game. So accordingly, you can choose for your children. If I talk about this गेम इन हिंदी, ओके, सो आपको क्या करना है इस गेम में, जब बच्चों ने 2 डाइस फेंके हैं, एक साइड पर बच्चों को कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्ड है वो दूसरी साइड पर लिखे हैं। अगर बच्चे के दोनों साइड के जो नंबर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो दोनों आपस में किसी रिलेशन से मैच करते हैं, मे बी वो उसका पर्यायवाची शब्द है, मे बी वो उसका विलोम शब्द है, मे बी वो उसका अर्थ है, जैसे भी वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, अगर तो वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो शब्द है वो उसके साथ फाइंड करके कोई रिलेशन फाइंड करते हैं, इट मीन्स दे हैव गॉट सक्सेसफुल, और आप उस टीम को या उस बच्चे को उसमें से मार्क्स दे देंगे, एंड यू विल बी राइटिंग द टीम्स नेम ओवर देयर, अगर आप टीम के अकॉर्डिंगली प्ले करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड पढ़ती हूँ, लेट मी सी वेदर आई एम एबल टू फाइंड और नॉट, लाइक ओके, tear, आई हैव रिटन द वर्ड tear on number 1, chair। अभी टेयर के साथ में अगर बच्चे का दूसरे डाइस पर नंबर 4 आता है, मींस यहाँ पर बिट फॉरबेड टोर, टोर, टेयर, टोर, टॉर्न, मतलब कि बच्चे को उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब द चाइल्ड इज एबल टू रिलेट। उसकी दोनों डाइस जो उसने फेंकी, एक पे नंबर 1 है, दूसरे पे 4 है, द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर, द वर्ड द चाइल्ड वॉज एबल टू फाइंड, उसने उसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड फाइंड कर लिया है, मीन्स द चाइल्ड हैज वन that game, that right, you will be writing child's signature over there, the child can put a signature over there। या अगर आप 2 टीम बनाकर खेल रहे हैं तो उस पे उस टीम का नाम, ए या बी, जिसने भी जीता है उसका नाम लिख सकते हैं, राइट। थोड़ा सा ये पहले का हायर वर्जन है, देखिए इसमें बच्चों को चांस जो है वो स्किप भी करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड उनको उनका मिल जाए, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल डिजाइनिंग दिस गेम की बच्चों को उनके कुछ कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स जो हैं वो अपनी ट्राई में मिलना चाहिए, राइट। सो ये आप ट्राई कर लीजिए इस गेम को, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट, राइट। So you can see I have written some words over here because I was not able to fit in the words at one place. So I have written some words at the top and some words at the bottom. So now the next one, देखिए ये हिंदी में जैसे मैंने आपको बोला ये थोड़ा उसका इजी वर्जन वाला बनाया है। एक तरफ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, विशाल, छोटा, दिन, अंधकार, ज्ञान, प्रिय, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, उसका अर्थ, विलोम, पर्यायवाची, जो भी आप आगे ऐड करना चाहें वो आप पे आगे नंबर है, आप ऐड कर सकते हैं। जब बच्चा डाइस वो थ्रो करेंगे उसके बाद में देखेंगे विशाल एक नंबर पे है, तो 3 नंबर अगर उसके साथ में आए पर्यायवाची तो बच्चे को विशाल का पर्यायवाची शब्द बताना है, और जब एक के साथ 2 आएगा तो बच्चे को विशाल का विलोम शब्द बताना है।
एक के साथ एक आएगा तो बच्चे को उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। ऐसे आप बहुत सारी ऑप्शंस उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ग्रामर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस स्ट्रैटेजीज को अपनी क्लास में यूज करिए, ताकि बच्चों का एक जो एंगेजमेंट लेवल है, यू सी दैट विल बी बूस्टेड। ओके, तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये जो मैंने आपको बोला ग्रिड है, ऐसे आपको यूज करनी है। यू शुड हैव ग्रिड एंड डाइस। और ये एक वर्ब ग्रिड जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट, इसमें जैसे एक तरफ हमने एक एक्सिस के ऊपर बच्चों को कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई, तो बच्चों को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट वन इज ये वर्ड बिल्डिंग ग्रिड है। इसमें बच्चों ने अगर उसके वर्ड लिखे हैं तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग उसके मीनिंग फाइंड करने हैं। अगर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ किसी न किसी एंगल से रिलेट करता है, मे बी वो उसका मीनिंग है, मे बी वो उसका ऑपोजिट वर्ड है, मे बी उसका वो सिनोनिम है, जैसे भी उसके साथ रिलेटेड है, दे हैव टू फाइंड दैट। अगर वो फाइंड करते हैं उसमें दे आर एबल टू फाइंड सम कनेक्शन, इट मीन्स दे विल विन देयर टर्न, right? So accordingly you may use it in your classes. So ये एक another form है इस grid का। इसमें बच्चों को क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो डाइस they will throw on one side, there are some names on another side also, like corresponding. Suppose I have got number 5 on y-axis Russia, and on x-axis I have got number 5. So I have to talk about Russian army, right? So like that you can use number of words, number of keywords related to the topic that you have taught in your class, and you can have fun element in your class, and that will be giving you revision. जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया, आपको कुछ प्री मेड चीजें बना के रखनी है, लेमिनेट करा के रख लीजिए इनको। यू विल बी एबल टू यूज द सेम इन योर क्लास। आप इसको बोर्ड पर नहीं डिस्प्ले करना चाहते तो आप इसको बच्चों को दीजिए क्लास में बोर्ड गेम खेलने के लिए, उनको ग्रुप्स में दे दीजिए। दे विल बी एबल टू प्ले इन डिफरेंट ग्रुप्स, बट आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपके साथ टीचर्स टूल में शेयर किया था। यू हैव टू मेक श्योर यू be on your round, on your toes, and keep on checking, keep on intervening wherever it is required, and do encourage your students. And if I'm talking about encouragement of the students, I do need encouragement too, in the form of subscriptions, in the form of likes, in the form of shares, and in the form of comments. Would love to read your suggestions and comments. Till then, bye bye, and I will be sharing with you number of another wonderful games to bring that kind of engagement, excitement, enrichment in your classes. Bye bye from Meenakshi Narula.